cooperative banking sector is also changing very quickly. And in this change, we need to find new voices, energize ourselves, look at it differently. और इसी बारे में बात करने के लिए to talk about this topic of energizing the business landscape, the landscape that we all are a part of, we have a panel discussion. To moderate this panel discussion, can I please request on stage our moderator, Mr. Pramod Karnad. We also have with us as a panel specialist, Vittalbhai Dhanani, CEO of the Varacha Cooperative Bank. Next, can we please have on stage Mr. Suryakanth Patil, Director, Shri Vaishnavi Cooperative Bank, Kolhapur. Mr. Lakshman Rao Kalmandi, Professional Director, Shimoga Arakanat Mandi Merchants Cooperative Bank. Can we please have you on stage? Suhas Patilji, Senior Director, Sales, South Asia, Infosys Finacle. He is right here. Thank you so much. And finally, can we please have on stage Mr. C.H. Tirupatai, who is from the Rajdhani Cooperative Bank. Thank you so much to our panelists for being on stage in the first place. I am so happy to moderate this session. As we move to the energizing the business landscape, let me simplify this theme first. I will first say, as we all know, what is a landscape. हम सबको मालूम है, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ज़्यादा समझ में आता है. तो बिजनेस लैंडस्केप में पहले we will simplify the word landscape. When we come across with a large area of land, we mean a landscape. बहुत बड़ी लैंड देखते हैं तो हम लैंडस्केप करते हैं. And then when we want to have a landscaping, it means we are improvising that land. When we are improvising that land, area of huge land, it is a landscaping. How we improvise, we have some infrastructure in it. We have a design for that land. Okay, we have some roads, and then we, as per the design, we have some trees, some flowers there, roads there, some infrastructure. So with this, we are landscaping. Okay, and when we talk about the business landscaping, we have a business and we want to have a landscaping of a business. When we have a business, we have a motto, we have a target, and therefore we have a business target document. It's a business landscaping is nothing but an architectural document. You know, we have set a framework. We have a set of framework, and also we have certain areas of operation in our trajectory. So we are running between, and when the work and the business coming together for achieving the goals and making a value, it is business landscaping. And now when we move to the banking business landscaping, we all are bankers. We all are cooperative bankers. So we have certain limitations as a cooperative banking also. We are facing tough competition with now small finance banks. We are facing competition with PSU banks, private sector banks, credit societies. So banks are having cooperative banks are having different challenges. And we want to have a growth. Year on year, we want to have a growth. And therefore, when we are talking about our banking business landscape, we have a certain document. Many banks term it differently. Some banks may be calling it as a business development plan. Some may be saying business plan. Some may be saying vision document. Okay, so 2 साल का 3 साल का vision document बनाया, business development plan बनाया, and subsequently then we review. Every quarter we review what we have done, the architectural document which we have made, और हमारी ये क्वार्टर के बाद 30 सितंबर हो गया तो हमारा विजन डॉक्यूमेंट में टारगेट क्या दिखा दे रहा था. And then when yesterday our panelists were saying कि when the people, process and technology, Ravi was saying, I think Ravi is here. So Ravi was saying yesterday that people, process and technology coming together. This is a business model. So every bank is having its own business model. अभी जो banks है उसकी अलग-अलग भी डिमांड होती है कि जैसे हमारे पास मंडी कोऑपरेटिव बैंक है,
यहाँ पे वीर शैव कोऑपरेटिव बैंक है। एवरी बैंक, अभी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हर कोऑपरेटिव बैंक का एक ही चैलेंज होगा। कंपटीशन तो है, बट वी आर मेंट फॉर सर्टन थिंग्स। देर आर कम्युनिटी बैंक्स ऑल्सो इन कोऑपरेटिव्स। वी हैव कम्युनिटी बैंक्स, रिलीजन बैंक। तो ये है कम्युनिटी। जैसे मिस्टर सूर्यकांत पाटिल is representing Veer Shaiv Cooperative Bank. So predominantly this bank came for the community. Veer Shaiv Lingais, this bank came. In Kolhapur, there are so many banks. I also hail from Kolhapur. There was a Maratha Cooperative Bank. There was a Mahavir Cooperative Bank. There is Saraswat Cooperative Bank serving for the community. So community-based banks are the common phenomena in urban cooperative banks. So हर बैंक की हर एक कम्युनिटी की डिमांड है, और उस डिमांड से हम लोग अपना अपना ट्रैजेक्टरी, अपना अपना विजन डॉक्यूमेंट, अपना अपना बिजनेस प्लान, अपना अपना बिजनेस मॉडल बनाते हैं. एंड व्हेन वी आर मूविंग इन द टुडेज एरा, इट इज़ द टेक्नोलॉजी. व्हाई द बिजनेस लैंडस्केप इज नाउ चेंजिंग, एंड वी शुड हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर बिजनेस डॉक्यूमेंट. जैसे अभी हम टेक्नोलॉजी के इरा में है, एंड इट इज़ गोइंग हैंड इन हैंड विद बैंकिंग. वी आर इन अ डिजिटाइज्ड इकोनॉमी. तो यहाँ पे अगर हम ट्रेडिशनल बैंकिंग करते रहे, कोई भी किसी भी कम्युनिटी के लिए करो या छोटे सेक्शन के लिए करिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर मेंट फॉर अ स्मॉलर पीपल, जो अर्बन में छोटे छोटे लोगों के लिए हमारी किया है. इनफैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टिंग दैट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शुड बी 75% ऑफ योर टोटल लेंडिंग. In fact, the target was only by 24, March 24, but fortunately, Amit Bhai Shah has given 2 more years, and the 75% target has been extended to March 26. That means our priority sector lending, or then our Devle Sahab was also saying yesterday that 25 lakhs का हमारा maximum ticket size होगा. तो ये we are meant for a smaller community, smaller people. और हमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस की हमें ये नहीं है. सो वी हैव टू हैव आवर रिस्क एपेटाइट, रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल, एंड वर्किंग टुगेदर विद द डिजिटाइज्ड टेक्नोलॉजीज. सो विद दिस बैकग्राउंड आई एम आस्किंग क्वेश्चंस टू माय पैनलिस्ट, एंड आई बिगिन विद मिस्टर सूर्यकांत पाटिल. सो मिस्टर सूर्यकांत जी, प्लीज टेल मी. सो आई जस्ट मेंशन दैट यू आर working for as a director for the Veer Shaiv Cooperative Bank. So when we have a community-based clientele, whether you have certain limitations, and when you have a vision document, business plan, and you want to have a growth year on year, then what are the plans you make to serve the society as a whole? Thank you, Pramod ji. When you said that community-based bank, we are no more working for the community itself. It's just governed and led by the stalwarts from my community. Thanks to the visionary leader of my area, Chhatrapati Shahu Maharaj, who established banks and educational institutes for all the communities in my area. But now these banks cater for the need of the entire society. Thankfully, my bank has achieved plus 10% growth in the last few years. With a competitive environment when the public sector banks and the private sector banks are coming into the rural and smaller areas with lesser rate of interest, it has been a challenge for the urban cooperative banks to maintain its customer base. The better ones, the loyal customers, erstwhile sometimes the generation next, are now running towards the public sector banks which offer lesser rate of interest, and the next generations do value for the money. My bank, or every bank, has to, in these years of regulation, Reserve Bank directives are to be followed. Our exposure limit was reduced a year or two ago. In 2020, the Banking Regulation Act has removed all the preferences and blessings it used to give to the cooperative banks, different reliefs
it was providing. So it is tough job working in this hard competitive area to maintain a good CD ratio, to maintain a good clientele has been a challenge. We have been working hard to develop new products, to see that the challenges of financial inclusion, we can get in more and more differential customers into our banking fray. Like the latest challenge was 50% of your loans was supposed to be less than 25. I'm proud to say that my bank has achieved 58% of that challenge. We have achieved more than 50%, 58% we are maintaining today. Yep. Luckily, we had the option to go into Karnataka, and there we have, for the agro products, we have made several schemes, and the small farmers have been benefited. Nearly 20% of my business, bank's business, has been with the small farmers, which has helped me to achieve this target. Yes, सूर्यकांत जी, थैंक यू. देखिए कि अभी ऐसा हो रहा है कि कल हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस के स्पीच पर देवले साहब ने कहा कि वी हैव 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड more than 600 plus banks are under supervisory action framework, SAF बोलते हैं जिसको. अभी ये तो चैलेंज है कि more than half, almost 40-45% of our urban cooperative banks are facing SAF restrictions, and there are so many restrictions. When we are talking about energizing the business landscape, we have other challenges. That challenge is survival challenge. यहाँ पे तो SAF लगा हुआ है, यहाँ पे RBI की पेनल्टी लग रही है, and under such circumstances 40-45% of UCBs whose existence is in danger, they have to improve their working और फिर energizing the business landscape. So यहाँ पे एक्सपोजर का लिमिट 50% पे डाल दिया है, डिविडेंड नहीं देना है, वगैरह वगैरह रिस्ट्रिक्शंस है. With these types of RBI constraints, RBI restrictions, RBI putting monetary penalties and all that, यहाँ पे सब अर्बन बैंकों को एक जगह ऐसे काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है. रेटिंग्स में लेट मी ऑल्सो टेल यू, ए रेटिंग्स है, देर आर 4 रेटिंग्स, ए रेटिंग है, बी प्लस है, बी रेटिंग है, सी रेटिंग है और डी रेटिंग है. सो ए रेटिंग में हार्डली 153 बैंक्स है, हार्डली 153 आउट ऑफ 1500 बैंक्स, और 200-250 बैंक्स है बी और बी प्लस में, बाकी पूरे सी और डी में है. तो ये जो हर बैंक की जो एक अपनी अपनी मांग है बिजनेस प्लान की और एक्सपांड करने की, इस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ विट्ठल भाई धनजी साहब से, CEO ऑफ वराच्छा कोऑपरेटिव बैंक गुजरात. अभी आपका बिजनेस मिक्स क्या है और आपके स्ट्रेटेजीज क्या है बिजनेस बढ़ाने के लिए? जी सर, मेरा बिजनेस मिक्स 5000 करोड़ है. मेरी बैंक है, ये 26 ईयर ओल्ड बैंक है, 26 साल में 5000 करोड़ का बिजनेस मिक्स है. और गुजरात में 214 बैंक में से मेरा नंबर 5 नंबर पे बैंक अभी वर्किंग कर रही है. तो अभी हम लोग बिजनेस स्ट्रेटेजी अथवा योर बिजनेस बढ़ाने के लिए जो रिजर्व बैंक का पूरा सर्कुलर का पालन करते हैं, फिर भी हर साल कोई साल बाकी नहीं है, पेनल्टी तो देती रहती है. कोई लास्ट 3 ईयर से हर साल 25,000, लास्ट फर्स्ट टाइम 25,000 दिया था, बाद में 50,000 दिया, लास्ट ईयर 1 लाख दे दिया. आगे बिजनेस बढ़ाना हम लोग चाहते हैं, लेकिन ये बम्प आ जाता है रिजर्व बैंक का, ब्रांचेस ओपन करने का भी एक, फिर भी हम लोग आगे आगे बिजनेस करते हैं. इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और डायमंड इंडस्ट्रीज सूरत में काफ़ी है, तो इसमें हम लोग एक्सपांशन, मेरा CD रेशियो 43-45% था, अभी CD रेशियो हम बढ़ा के 66% ले गए हैं. तो एग्रेसिवली काम कर रहे हैं. इसके साथ साथ अदर इनकम जनरेट करने के लिए म्यूचुअल फंड के लिए हम लोगों ने एक म्यूचुअल फंड कंपनियों के साथ एक एग्रीमेंट किया है और बहुत बड़ा काम भी म्यूचुअल फंड के लिए कर रहे हैं. इंश्योरेंस के लिए भी कॉरपोरेट एजेंसी ली हुई है और 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी काम कर रहे हैं. अच्छा धनाजी साहब, मुझे ये बताइए कि आप डिजिटाइजेशन का कैसे फ़ायदा ले रहे हैं इन योर बिजनेस लैंडस्केपिंग? हाँ, डिजिटलाइजेशंस में मेरी बैंक में सर, जब CTS आया था तो पूरे इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक में CTS का
अमलवारी करने के लिए हम लोग फर्स्ट था। तो जब बैंक का स्टार्टिंग 1996 में हुआ था, तब से संपूर्ण कंप्यूटराइज बैंक है। आज जितनी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक जो भी डिजिटलाइज फैसिलिटी दे रही है, वो सब फैसिलिटी मेरे पास है। नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशंस का AUA KUA भी काम कर रहे हैं, LOS भी है मेरे पास। और बहुत बड़ा एकदम डिजिटलाइजेशंस के बारे में कस्टमर को 1 लाख ट्रांजेक्शन डिजिटल ट्रांजेक्शन हर रोज़ का मेरी बैंक का कस्टमर कर रहे हैं। 5 लाख कस्टमर का बेस है। तो डिजिटलाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर के साथ हम compete कर रहे हैं। तो यहाँ बैठे सब मेरे कोऑपरेटिव बैंकर्स को ये भी विनंती है कि आप अभी जो इतनी कंपटीशंस बोल रहे हैं सर, तो डिजिटलाइजेशंस कस्टमर को जितना भी हम लोग दे सके इतना देने का कोशिश करने का है, तो ही कस्टमर हमारे पास रहने वाला है सर। Okay, thank you, Dhanaji ji. I now come across to Mr. Suhaji. Suhaji, you are a IT person. So now I want to ask you, अभी हमारे पास artificial intelligence है, automation है. You tell me whether this artificial intelligence, automation, whether it can energize the business landscape of a bank, and how we can take advantage of technology. Let all the cooperative bankers be delighted with your views. Thank you, sir. Talking about AI, that is artificial intelligence, our view is that it is all about data. And when तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमें बात करनी है, एवरीवन टॉक्स जो डेटा के बारे में होता है एंड डेटा का एनालिसिस होता है। तो हमारे व्यू में ये जो इंटेलिजेंस हम लोग बात करते हैं, ये एक्वायर्ड इंटेलिजेंस है। अभी बैंक की बात करते हैं तो बैंक में डेटा तो ऑलरेडी है हमारे पास। पूरा डेटा हम लोग, पूरा कोर बैंकिंग सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम है, तो वहाँ पे डेटा अवेलेबल है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कैसा करें, उसका करना क्या है। तो ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, हमारे हिसाब से एक्वायर्ड डेटा है, जो हमारे पास है ऑलरेडी, कस्टमर का डेटा होता है। एंड उसके साथ यू कैन हैव सर्टन पैटर्न्स, अपना कस्टमर जैसा पूरी जानकारी अपने पास होती है कि कौन सा कस्टमर कब आता है, उसको क्या ट्रांजैक्शंस करता है, उसका वर्कफ्लो क्या है। तो ये इसके बारे में जो थोड़ा कंप्यूटर वर्ड्स में जो एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा हमारे पंडितों ने, हमारे कंप्यूटर के पंडितों ने वो आर्टिफिशियल में कुछ काफ़ी सारी कैटेगरीज बनाई है। वो टेक्नोलॉजी वर्ड्स में आप बताएंगे तो देयर आर सम 7 टाइप्स, 7 टाइप्स के हैं। They talk about narrow intelligence, they talk about general intelligence, they talk about super, some will talk about reactive machine. So whole idea is that उसमें क्या करना है इसमें कि आपका जो एरर्स है पूरा रिडक्शन इन एरर करना है। अब हम लोगों को फाइनली सुविधा देना है कस्टमर को, तो AI के साथ थोड़ा 24/7 हम लोग सर्विस दे सकते हैं। कुछ पैटर्न समझने के बाद और रिक्वायरमेंट जो टाइम के हिसाब से चलती है, तो उसमें इनोवेशन ला सकते हैं। इन सिंपल टर्मिनोलॉजी AI विल हेल्प यू। ये जो हमारा डेटा है उसके साथ हम रिपीटेटिव जॉब्स होते हैं उसको थोड़ा रिडक्शन कर सकते हैं, डेली एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, नया इनोवेशन ला सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग, इट इज़ वेरी इजी एंड इट कैन बी डन, एंड इट कैन बी डन यूजिंग मशीन्स बेसिकली, एंड ऑल द रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन पूरी सुविधा के साथ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल के, अभी जो एनर्जी आ रही है, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस में ट्रांसफॉर्म होती है, एंड दैट इज़ रियली हेल्पिंग द बैंकिंग सेक्टर, इट इज़ हेल्पिंग द इकोनॉमी, इट इज़ हेल्पिंग इंडिया टू हैव अ गुड डिजिटल इनोवेशन एंड अ गुड डिजिटल इंडिया रोड मैप जो हमारे PM साहब ने बनाई है, उसमें हमारा योगदान हो सकता है AI के साथ। यस सुहास जी, अभी मैं एक पैनलिस्ट को मिस कर रहा हूँ। वन ऑफ द पैनलिस्ट वाज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ही वाज फ्रॉम सतारा, ही इज़ नॉट वेल सो ही कैन नॉट पार्टिसिपेट। लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि हम बहुत सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में देर आर 2-3 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स।
I hailed from State Cooperative Bank and he was to come from a DCC bank. So we have a rural cooperative credit structure. So rural cooperative credit structure के लिए जो ये energizing business landscape है, ये उसके अलग से उसके parameters है, because we State Cooperative Bank और DCC Bank, they are working for agriculturist. हम अपने किसान के लिए फाइनेंस करते हैं, रीफाइनेंस करते हैं, किसानों के लिए फाइनेंस करते हैं, एग्रीकल्चर लेंडिंग करते हैं और क्रॉप लोन देते हैं. सो व्हेन वी वांट टू हैव आवर बिजनेस लैंडस्केप फॉर दोज एग्रीकल्चर लेंडर्स, उसका कुछ रिस्क एपेटाइट अलग है, उसका पैरामीटर्स इन एनपीए का जो भी आईरैक नॉर्म्स है उनके लिए अलग से नॉर्म्स है. तो ये यहाँ पे आप लोग सब इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट रिसीवेबल का आप कुछ प्रोविजनिंग नहीं करते, ओवरड्यू इंटरेस्ट का. वहाँ पे ओवरड्यू इंटरेस्ट के लिए 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ती है. सो कोऑपरेटिव बैंक में भी रूरल कोऑपरेटिव के लिए अलग सा है, वहाँ के सब स्टैंडर्ड के लिए 2 साल है, यहाँ पे 1 साल है. सो देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स. सो यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल होगा वो अलग सा होगा. इसी बैकग्राउंड पे मैं आ रहा हूँ लक्ष्मण राव कलमंडी से, कलमदानी से. तो कलमदानी जी, आप शिमोगा मंडी मर्चेंट्स कोऑपरेटिव से, सो मैं इसको जोड़ रहा हूँ कि आप मंडी कोऑपरेटिव बैंक. तो आपका बिजनेस मिक्स कैसा है, आपका बिजनेस मॉडल कैसा है, और हाउ यू, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, बिजनेस के टेस्ट अलग हो रहे जा रहे हैं, और ये जो न्यू जनरेशन है, ये न्यू जनरेशन हमें छोड़ के प्राइवेट सेक्टर बैंक को जा रही है. वी वांट टू अट्रैक्ट दिस ये यूथ डेमोग्राफिक्स. तो आप मंडी कोऑपरेटिव बैंक से आप इनसे कैसे जुड़े जाते हो, यूथ से जुड़े जाते हो, टेक्नोलॉजी से जुड़े जाते हो, और एवर चेंजिंग कस्टमर नीड्स है, हाउ डू यू कैच अप विद दोज एक्सपेक्टेशंस? Yeah, good morning to all of you, distinguished panelists and an elite audience, ladies and gentlemen. Thanks for the opportunity. By education and practice, I am a chartered accountant and is on the board of Shimoga Mandi Merchants Cooperative Bank. It's a unit bank and basically caters to the needs of the traders in APMC yard. Now, I will take a small detour from Pramod sir's, the issue that he raised. Energizing the business landscape. We all know that there are about 1,500 plus urban cooperative banks in the country. Of that, about 50 odd banks are large urban cooperative banks, which, through their adoption of technology and various services, they will continue to survive and give very competitive and technology edge, services as offered by the other banks. Now the question is, how do we energize the other 1,450 banks? Of the 1,450 banks, urban cooperative banks, nearly 60-70% of them are unit banks. Am I right, sir? Now the question is, most of them are under tier 1, that is having deposits less than 100 crore. So now they will have to compete with new generation banks and other private sector and PSU banks, where they have offered various technology products. They reach the customer 24/7. Now these smaller banks do not have that kind of capability or the skill sets, and their net interest margin earning is also narrowing down by the it will continue to narrow down because they will have to offer, otherwise the customers will move away. This is what is happening in Shimoga. Most of the traders are very large traders. They expect high-tech, high-quality service 24/7. And this is a Shimoga Mandi Bank is a Tier 2 bank. Nevertheless, they offer a good amount of technology service and 24/7 services.
Now the issue is for the smaller banks, they will have to look at other areas since their net interest margin is coming down or it's narrowing down. They will have to look at offering all fintech services. Say for example, mutual fund products, distribution, insurance, life and non-life. And otherwise, they will have to look at other avenues. Otherwise, what happens is their survival becomes a issue as we, look into the future. And Shimoga Urban Bank is, Urban Mandi Merchant Cooperative Bank is one of the financially sound and well-managed banks as per the Reserve Bank, criteria, offering good service and better managed, and their NPA, net NPA is almost 0. So this is what is. Yes, Lakshman Rao ji, I agree with you. And now over to 𝐂𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐳𝐢𝐧𝐠, who is the cyber security auditor for Rajdhani Urban Cooperative Bank, Hyderabad. So now you are a cyber security auditor. When now Mr. Lakshman Rao ji was referring to Tier 1 capital banks, who are also just 100 crores के बीच में है, 100 crores के नीचे है, B का Tier 2 का जो है 100 से 1000 crore के बीच है. So now these two types, यहाँ पे challenges तो है, and then we have a cyber security challenges also. Now these small banks, of below 100 crores, they are really not affording the expenses, and then the cyber security threats are also there. But with the changing technology, they have to adopt. They have to go with the times. So how they can patch up this gap and run with the technology and also enhance their business prospects? Thank you, sir. Respected panel chairman and dignitaries, and the opposite dais dignitaries, good morning. I request the panel chairman, as the time is lapsed, please extend 3 minutes. As the cyber security subject is very difficult to receive and difficult to implement, difficult to monitor. As already told, banks are in the cooperative sector. As on March 2023, 1547 urban cooperative banks were there. One is, sir, told Tier 1, Tier 2, Tier 3. Regarding this norms devised by the RBI as per arriving the banking structure and strength of the assets and liabilities. As far as security concerned, RBI has issued a circular 31st December 2019 dividing the 4 levels: level 1, level 2, level 3, level 4. You might have understood by this time how small bank, single unit bank or multi-state cooperative banks, less than 10 bank branches, how to adopt the latest cyber threat intelligence, threat management. Very difficult, sir. You have rightly pointed out. Here, I can say, I think 6th I met RBI officials and submitted on behalf of 1547 banks. I requested here cyber security 2 matters. As we are in the Rajdhani Bank, I can say proudly, first of all, self-risk assessment. Even public sector banks also not adopted the risk assessment by complying the NIS standards, by complying the ISO 31,000 standards. But our only Rajdhani Bank Hyderabad has implemented about risk assessment with 32 columns. Yesterday, I have noticed our presumption or perception about the cooperative bank, they are maintaining very low standards of security. No, sir. Now,
They have improved a lot. They have started. 1 minute, sir. They have already started. There are, to come to the security, Rajdhani Bank has implemented all structures with 32 columns. Yesterday, referring inherent risk. Inherent risk arrived, present risk also arrived, and planned risk also arrived. Ultimately, 3 stages, risk has come to mitigation level, except cyber security insurance, and focusing artificial intelligence also, and a bank is also ready to face the artificial intelligence cyber threats also. Apart from that, recently DPDP, Digital Personal Data Protection Act has come. With that also, top management, our CGM Adinarayan Reddy, IT manager, 3 days we have evolved how to face the DPDP Act in the respect of customer privacy. There are, if you permit me 1 minute, sir, people, process, technology, systems. There are the 4 segments. Under 4 segments, 3 segments are important. Data in transit, data in process, data in rest. This 3 is equal to confidentiality, integrity, availability, ultimately. So that, thank you for giving. If at all given an opportunity, I am sure that you can maintain with leverage in defensive methodology different. In the offensive methodology, RBI has to define the norms according to small banks and giving the leverage, so that there are 4 types of control: preventive, corrective, detective. All cooperative banks are maintaining compensate control, but there is a perception needs to be changed. Very strong mechanism implemented. They have also, RBI has given phased manner to implement 2 or 3 times. By that time, our cooperative banks will compete with the cyber security confrontation with the artificial intelligence also. Yes, thank you, sir. Thank you, Thiru Venkataji. Actually, thank you very much for your inputs. We are now concluding this session. As a jury member, I was coming across with certain entries of different banks for growth in loans and advances award. And I saw one entry from a particular urban cooperative bank that they had actively implemented festival loans. And with that, they could have a 25% growth. So different, देखिए अभी जैसे कि गणपति फेस्टिवल है, जन्माष्टमी है, ऐसा है, फलाना है. So different फेस्टिवल के लिए उन्होंने फेस्टिवल लोन्स दिए. उसके लिए उन्होंने प्रोसेसिंग फ़ी कैंसिल कर दी. No processing fee for the this thing. And then you can apply immediately. KYC में भी बाद में. So with that, the growth was there. So these types of innovative products we need to have for a business growth. Any cooperative bank will definitely need to energize its business landscape, irrespective whether it is a rural cooperative bank, irrespective whether it is urban cooperative bank, whether it is a small tier 1 capital bank or tier 4, Saraswat bank हो या 100 crore के अंदर वाली बैंक हो, सबको challenges है, and they need to go with the technology. As yesterday also we were talking about the people, process and digitization. So with all and technology. So these all are going hand in hand and getting together. With this, we can energize the banking business landscape. Thank you so much, my fellow panelists, for giving your inputs. Thank you.